Good afternoon, dear students. And we'll be sharing a few tips how you can actually revise the entire biology in last 7 days. So as you all know, biology is 50% of your marks. I mean, 360 marks out of 720, and it's a theoretical subject, which requires definitely more and more of revision. So rather than reading each and every line of NCERT at this point of time, it's better to revise the difficult concepts all over again. So जो भी टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसको वापस रिवाइज कर सकते हो. Again, next important thing is to read the summary of the chapter. That gives you a quick overview of the chapter. And also, I would suggest that you should go through each and every diagram. So reading the summary and going through diagram will be very, very helpful to get a quick overview of the chapter. Apart from that, you need to solve your NCERT back questions and exemplar जो रहता है. So make sure that you solve the exemplar. And जो last few years के papers है, PYQs जिसे हम बोलते हैं, I would recommend that you all just solve this at this junction of time. At the last time, just go through the factual chapters like ecology ka unit hai, genetics, these topics. So please go through those topics. You an overview of botany chapters, tricks and mnemonics to remember some examples of, let's say, morphology, plant kingdom, biological classification, how to remember the cycles of photosynthesis, respiration is what I'll be discussing today. So I guess let's get started. So to start with, in this particular chapter, the important things to remember are the examples. Yeah. So talking about biological classification, in this particular chapter, we'll be focusing on some key points. We will revise the key points, key topics. And apart from that, how to remember the examples and what are the important concepts. I will quickly give you an overview of the same. So talking about bioclassification, you have to know this table 2.1 very well, where they have classified the characters of Monera, Protista, fungi, plantae, and animalia. So table 2.1 is extremely important. Talking about cell type, you know that Monera, the only one which are prokaryotes, the rest all are eukaryotes. And because it's a prokaryote, the nuclear membrane is absent, rest all have the nuclear membrane. So it's present for all, correct? फिर अगर हम cell wall की बात करें, Monera has non-cellulosic cell wall. Protista has cell wall, but that's only in few. Fungi has cell wall, which is made up of chitin, which is a very peculiar character. Plantae ka cell wall is made up of cellulose. Animals don't have cell walls, which is why we call it as absent. Talking about body organization, Monera में cellular type होता है. Protista also has cellular type, but fungi being eukaryotic and multicellular, so they will show multicellular body type or loose tissue. Plants are all the more advanced, तो उनमें tissues और organs होता है. Like you guys know, आपने पढ़ा है parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, all these are tissues. And organs like root, stem, leaves are also the
organs in the plants, right? So it's a tissue or a organ. Animals, we are the most evolved. So we have tissue, we have organs, we even have organ system. Correct? Ma'am, sorry Mode to of nutrition की बात करें तो Monera. Hello. Yes, sir. Ma'am, sorry to interrupt. Your screen is not Yeah, I'm not listening, visible. sir. Tell me. Okay, ma'am. Sorry. Screen is not visible, sir. Just a moment, sir. Yes. Sir, just let me know if it's visible. 1 minute, Yes. sir. I'm just. Now it is visible. Yes. All right, sir. All right. Thank you. Thank you. So, dear students, as I was discussing about this so at the last minute, this is the concept which you must work toward. There are very high probabilities of question being asked from this particular table. Moving ahead to the next part, and that's kingdom. कुछ exception level exceptions like initial place. Sorry for disturbance. There. Saying Monera mein, there is has acid of ethanol. Salty acidophiles are found in hot springs, correct? And methanogens की अगर हम बात करें, they are found in marsh. So these three terms are very, very important. And the most prominent examples to remember are examples in nostril anabina. कैसी सपोज आप किसी शॉप में जाते हो और स्टॉक नहीं है तो व्हाट विल द शॉपकीपर से
Extremely sorry for they play an important role, especially as concept to be known. Then tell me which is the organism which completely lacks cell wall. So this is a very important thing again, mycoplasma. All these are example-based questions, correct? Moving to kingdom Protista. Protista includes 5 categories and they are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. क्राइसोफाइट्स के कौन से एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं? Diatoms and desmids. So kindly remember these two examples, diatoms and desmids. Diatoms, as you all know, there's something called diatomaceous earth. वो diatoms अपना cell wall deposition छोड़ते हैं, वो accumulate हो जाने के बाद diatomaceous earth बन जाता है, and that is important for polishing, for filtration of oil, syrups, etc. What is the other name for desmids? It is called golden algae. So remember, chrysophytes, the two prominent examples are diatoms and desmids. Talking about dinoflagellates, the examples of dinoflagellates includes Gonia ulax. And because of this, there's something called red tide. ये जो Gonia ulax है, वो पूरा कुछ toxin release करता है, because of which the entire water body becomes red color. This is already a PYQ, so please know this very well. Euglenoids, what is so peculiar about them? They don't have cell wall, but they have pellicle, and that is a protein-rich layer. उनमें cell wall की जगह पे क्या होता है? Pellicle होता है. So please remember they have pellicle. By the way, what I suggest is, जब आप पढ़ाई करते हो कुछ important terms हैं तो आप NCERT में बाजू में लिखते जाओ. So last minute जब revision करोगे, that will help you to revise it more better. Euglenoids का एक और character है, that is they are mixotrophic, meaning they are autotrophic as well as heterotrophic. I mean they behave as autotrophic in presence of sunlight, and in absence of sunlight they behave like heterotrophs. और क्योंकि दोनों जैसा behave करते हैं, we call them as mixotrophic. Okay. Slime molds, they are basically saprophytic or fungi-like protist. तो जब suitable condition होता है, तो they spread, they grow as an aggregation. And what is the name given for that plant body? It is called as plasmodium, because they kind of spread long distance tak, so we call that as plasmodium. By the way, this plasmodium only differentiates and it forms fruiting bodies which has spores at the tip. और यही spores उन्हें non-favorable conditions को resist करने में help करते हैं. So when you see plasmodium, you will see it during favorable condition. And where do you see spores? During unfavorable condition. Okay? तो ये plasmodium word याद रखना, ठीक है? Talking about protozoans, they are nothing but animal-like protists. They are further categorized into 4 categories, and that is amoeboid, euglenoid. So let me first talk about amoeboid. Amoeboid protozoans, they have pseudopodia. You all know amoeba में क्या होता है? False feet. What is the name of the false feet? It is called pseudopodia. And one of the example is ant amoeba. आपने सुना होगा कि ये जो ant amoeba होता है, one of the species is ant amoeba histolytica, जो amoebiasis cause करता है, right? So this is nothing but amoeboid protozoan. Moving to the second one, which is flagellated. नाम से ही पता चलता है कि जो flagellated protozoan का example is trypanosoma. As I've been saying कि examples पे focus करो, तो euglenited protozoan क्या cause करता है? Sleeping sickness. Does not mean कि इंसान सोते ही रहेगा. In fact, उल्टा होता है.
the person finds very difficult to sleep. मतलब उसका insomnia हो जाता है उनको. They cannot sleep only. So that is what is called sleeping sickness. And that sleeping sickness is caused by which? The answer is trypanosoma. Next is ciliated protozoan. The name suggests that they have cilia. And another peculiar character, they have a cavity in the body which is called gullet. तो याद रखो कि ciliated में इनके पास क्या होता है? Gullet, जिसके थ्रू खाना भी अंदर जाता है और पानी का मूवमेंट होते रहता है. करेक्ट. Example of ciliated protozoan is paramecium. So what is the example of amoeboid? It was entamoeba. Flagellated का example है trypanosoma और ciliated का example is paramecium. Last for this protozoan are sporozoans. As the name says, they have spore-like stage. And the very, very prominent example is Plasmodium, which causes malaria. ये Plasmodium और slime mold वाला Plasmodium दोनों अलग है, okay? ये Plasmodium malarial parasite है जो malaria cause करता है. So we studied a few examples. Chrysophytes का examples क्या था, guys? It was diatoms and desmids, correct? Dinoflagellates is goniolax. Euglenoids is Euglena. Slime molds, you have to remember Plasmodium, which is an important characteristic. Protozoans के 4 टाइप. अमीबॉइड का एग्जाम्पल है एंटमीबा. फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा एंड स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल इज मलेरिया. ओके, तो हम ahead with kingdom fungi. So fungi obviously is eukaryotic, it's multicellular, but there is one exceptional case, okay, which is not multicellular and rather unicellular. I'm sure आपको समझ ही गया होगा. And that is none other than yeast. Correct? Fungus जब algae के साथ association करता है, what is the fungus of an algae का association called? It is called as lichens. And what is the association of fungi with root of higher plants called? It is called mycorrhiza. ये भी पहले का past paper question है, and this is again very important. So lichens and mycorrhiza is an example of symbiont, मतलब symbiotic association. Talking about the life cycle of fungi. Fungi का जो sexual life cycle है, okay, it includes mainly 3 stages. सबसे पहले 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, and we call that particular stage as plasmogamy. So when there is fusion of protoplasm between 2 motile and non-motile gametes, we call that as plasmogamy. Gamy का मतलब fusion. Plasmo. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Protoplasm का fusion हो रहा है. Followed by that, the next step is nucleus का fusion होना. और आपने ये word पहले भी सुना है, carrion. Carrio means nucleus. So what is the fusion of nucleus called as? It is called as karyogamy. So firstly, there is plasmogamy, then there is karyogamy, and once the fusion has occurred, once the diploid structure is formed, it will now undergo meiosis. Meiosis होने के बाद, it will form haploid spores. So which are the 3 steps? Plasmogamy, karyogamy, and meiosis. But कुछ particular fungus में एक distinct pause, एक distinct रुकावट देखी जाती है, जहां पे 2 न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर होते हैं. So there are 2 nuclei per cell, and we call that condition as dikaryon, and we call that phase as dikaryophase. So there is dikaryon and there is dikaryophase. Condition is dikaryon and the phase is called dikaryophase.
This is mainly seen in asco and basidiomycetes. Now coming to a little tricky topic, guys, but trust me, इसके examples हम 4 classes की बात करने वाले अभी fungus के, and those 4 classes are basically phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, as well as deuteromycetes. So I'm just sharing a particular image with you all to explain you how can we learn this particular thing. So you all can see a tabular form of phyco, asco, basidio and deutero. Correct? इसको हमने टेबुलर फॉर्म में बनाया है, इसके एग्जांपल्स भी याद रखेंगे, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, all this is what we'll be focusing on. Okay, so talking about phycomycetes, the word phyco refers to algae. तो जहां पे भी आपको word phyco दिखेगा, that is something to do with algae. So what is the common name? Phycomycetes is correctly called common algae. Ascomycetes, अभी देखो ASC को अगर हमने रिवर्स किया, जंबल किया, तो वो सैक हो जाएगा. So it is called sac fungi. Basidiomycetes is commonly called club fungi, and deuteromycetes, the other common name is imperfect fungi. तो firstly आपको सबके common names याद रखने हैं. Mycelium with you all. Mycelium is nothing but the body. फंगस की बॉडी को, फंगस का जो हाइफे का नेटवर्क होता है, धागा धागा धागा, उसी को हम माइसीलियम बोलते हैं. माइसीलियम योर इज aseptate, मतलब देयर इज नो सेप्टा, देयर आर नो क्रॉस वॉल्स. इनफैक्ट एक सेल में ना बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियाई और कोई भी क्रॉस वॉल नहीं होता है. सी इसे ना क्रॉस वॉल्स बोलते हैं. दिस इज क्रॉस वॉल्स. बट अगर आप दूसरा इमेज देखोगे तो उसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है, which is why we call it aseptate. And because there are so many nuclei in one cell, it is called as cenocytic. This multinucleated condition is called cenocytic. Okay. Talking about asco, basidio and deutero. Ma'am, sorry to interrupt. Your screen is not visible. Okay, sir. 1 minute. I'll just check. Yes. Actually, sir, on my side it's visible. 1 minute. I'll just reshare it, I guess. Yes. Sir, can you just tell me if it's visible now? Yes, ma'am. It is visible. All right, sir. Thank you. Thank you. So these are the 4 classes of fungi, which are phycomycetes, asco, basidiol, algal fungi, sac fungi, club fungi, just like I told you, phycom is correct for club fungi. Sorry. ऐसे multinucleated non-septate hyphae को we call it as cenocytic hyphae. Asco and basidio both have same type, and that is उनका hyphae में there are many septa like this, and there are branches. So we will call it as branched and septate.
Discussing about deutero. Deutero में again there is septate I mean, and it is branched. So it's branch and septate for all three, asco, basio and deutero. But याद रखना फाइको का कैसा होता है सिनोसिटिक, मतलब it is multinucleated as well as non-septate. Let's discuss about the asexual reproduction. Phycomycetes में there are these motile spores. Motile क्यों? Because they actually have flagella. So what are these motile spores called? They're called zoospores. Okay. And the non-motile spores are called aplanospores. So there are zoospores and aplanospores. Whereas in case of ascomycetes, they have conidia. Conidia is produced exogenously. अगर आपने देखा होगा पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर, उसकी बाहर की तरफ ऐसे छोटे छोटे कोनिडिया होते हैं, like this. So tell me, ये एंडो है या एक्सो है? बाहर है तो क्या बोलेंगे? We will call it as exogenously. Correct? So conidia are produced exogenously on the tips of these mycelium, which is called conidiophore. I want you all to understand that the body, the mycelium को conidiophore बोलते हैं, और ये जो spores है इन्हें conidia बोलते हैं. यही conidia germinate करके नया plant body बनाएगा. So this is about the asexual reproduction of ascomycetes. Now I'm going to discuss about basidiomycetes. So basidiomycetes do not show sexual reproduction, but they show a very common method, and that is fragmentation. A vegetative reproduction wala method, and that is fragmentation. So remember, they do not have asexual spores, but they show fragmentation. Talking about imperfect fungi, deuteromycetes, they are just like ascomycetes. So they also show conidia. ऐसे स्पोर्स होते हैं कोनिडियोफोर्स के ऊपर, जिन्हें हम कोनिडिया बोलते हैं. डाइकैरियोफेज, as you know, is a phase जहां पे एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई है, and that is seen only in the case of ascomycetes as well as basidiomycetes. But it is absent in case of phycomycetes and deuteromycetes. Correct? Phycomycetes. Let's discuss the sexual reproduction and then दो gametes के fusion से, imagine that दो gametes का fusion हुआ है. So what is the gametes का fusion called? It is called zygospore. This zygospore is formed by the fusion of the gametes, and as you know, gametes can be similar in the structure. We call them as isogametes. If they are dissimilar, we call it anisogametes, or it can be even oogametes. In case of ascomycetes, they have ascospores. They have a fruiting body called ascocarp. So let me give you a little overview on how ascospore and ascocarp looks like. So the fruiting body is called ascospore, ascocarp. And the spores are called ascospores. Okay, let me just draw. तो ये जो fruiting body दिख रहा है आपको, that is ascocarp. ये पूरे structure को क्या बोलेंगे हम? Ascocarp. इसी के अंदर ना, there are these sac-like structures. छोटे छोटे sac-like structures आपको दिख रहे हैं? These are the asci or ascus singular. And inside this asci, there are these small pores which I'm showing in black color. And these pores inside the asci are called ascospores. तो आप कैसे याद रखोगे? याद रखोगे like body, fruiting body is ascocarp. The sac-like structure is asci,
And the spores present in them are called ascospores. So yaad rakhna, fruiting body, carp, that is ascocarp. Then the sac-like structure, asci. And the spores which are there inside are called ascospores. Similarly, we discuss about basidiomycetes. The sex organs are absent, but plasmogamy is present here. It is brought by fusion of two vegetative or somatic cells. So इनमें sex organs नहीं होते हैं, but क्या होगा उनमें? There is going to be plasmogamy. दो vegetative cells का fusion होने वाला है. वो vegetative cells same strain, different strain कोई भी हो सकता है. और उसी fusion के बाद एक dikaryotic mycelium बनेगा. That will give rise to basidium and then basidiocarp. So please understand that the fruiting body, the entire body is at basidiocarp. Then there are these sac-like structures which are called basidium or basidia. And उसी में ना spores develop होगा बाहर की तरफ, like this. These are called basidiospores. So did you realize just like ascocarp, there is basidiocarp. Just like asci, there is basidia. And just like ascospores, there are basidiospores. Lastly, imperfect fungi नाम क्यों रखा है? Because हमें सिर्फ उनका asexual reproduction पता है. We are yet not aware about their sexual reproduction. So sexual reproduction is absent in case of imperfect fungi. But मान लो अगर उनका sexual reproduction discover हुआ तो क्या करेंगे? उन्हें ड्यूटेरो से निकालकर किसी और क्लास में डालेंगे. सो ये एक टेम्पररी क्लास है जहां पे ये सारे फंगस को भर के रखते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें अभी तक पता नहीं है. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट algal fungi, sac fungi, club fungi as well as imperfect fungi. Now I'm going to share with you the NCERT PDF. We go back to our NCERT. So let's discuss about plants and animals now. We've already discussed Monera, Protista, fungi, as well as the 4 classes of fungi. Let us discuss about Plantae and Animalia. Again, as I've been saying, the exceptional cases, the examples, insectivorous plants के 2 examples याद रखोगे आप, and those are bladderwort and Venus flytrap. और parasitic plants का आप example याद रखोगे, and that is cuscuta. So remember the exceptional cases in plants, which is a parasitic plant. It is cuscuta. ये parasitic है क्योंकि ये खुद का खाना नहीं बना सकता है. इसकी leaves green नहीं होते, इसीलिए it cannot make its own food. Host plant पे depend करेगा. And कुछ plants है जो insect पे depend करते, feed करते, उनका nitrogen obtain करने के लिए. Those are called insectivorous plants like bladderwort and Venus flytrap. Bladderwort or Venus flytrap are examples of insectivorous plants. So these are 2 things to be known well. Anyways, आप ये पूरा chapter पढ़ोगे and आपने Animalia का भी chapter पढ़ा है, correct? Let's go ahead with viruses, viroids, prions and lichens. Every year in the chapter bioclassification, there's some question on this particular topic. And there's a question on fungi. So please emphasize on this topics well. 3 साइंटिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने डिस्कवरी किया था. One was Dmitry Ivanovsky. What exactly was his finding? He saw that there were some
causative agents जो mosaic disease करते थे. Tobacco में there is tobacco mosaic disease which is seen. And he saw that वो जो भी particular organism है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है क्योंकि वो बैक्टीरियल थ्रू फिल्टर से पास हो जाता है. Who was the one to discover that? It was Dmitry Ivanovsky. Then came another scientist जिनका नाम था M.W. Bijlani. और ये M.W. Bijlani क्या करते, मतलब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक हेल्दी प्लांट में डिजीज हो सकता है और अगर वो डिजीज प्लांट का जूस निकालकर अगर हम दूसरे हेल्दी प्लांट में डालें तो वो भी डिजीज हो जाता है. देयर इज सम काइंड ऑफ कंटेजियस फ्लूइड which he called it as contagium vivum fluidum, which means there's some contagious fluid inside. Who did this discovery? It was M.W. Bijlani. Similarly, there came another scientist जिनका नाम था Stanley. Stanley was the one जिन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया था. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में भी आ सकता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट viruses, there are three categories of viruses: plant virus, animal virus, and bacterial virus, also called bacteriophages. So what is the genetic material for plant virus? Usually plant virus has single-stranded RNA. Animal virus has either single-stranded or double-stranded RNA, or it can be even double-stranded DNA, whereas bacterial viruses usually has double-stranded DNA. Again, very important for match the following, correct, incorrect type of question and straight question. So tell me, which virus shows single-stranded RNA? What will you write? Plant virus. Which one shows single-stranded RNA, double-stranded RNA, or double-stranded DNA? It is none other than animal virus. And tell me the one which shows double-stranded DNA. The answer to that question is bacterial virus or bacteriophages. Hope it's clear to all of you. Now, talking about viroids. Who was the one to discover about viroids? It was T.O. Diner. And उन्होंने देखा कि ये viroids are even smaller than viruses. Correct? उनका जो RNA है, it is of low molecular weight. So ये important points है, characters है इसके. Talking about prions or prions, they are nothing but proteinaceous infectious agent. यानी ये abnormally folded proteins होते हैं और यही proteinaceous infectious agent diseases cause करता है. Like there's a very common disease seen because of prions. It is seen in cows. We call it mad cow disease. Mad cow disease in case of obviously cow, or humans में it causes Creutzfeldt-Jakob disease, CJ. That's nothing but Creutzfeldt-Jakob disease. इसे हम bovine spongiform encephalopathy भी बोलते हैं. Mad cow disease को. Mad cow disease is called bovine spongiform encephalopathy. Bovine refers to cow. Spongiform refers to spongy tissue. Encephalopathy refers to the brain. Right? Talking about lichens, आपको पता है कि lichens is nothing but algae और fungus का association. Algae को हम phycobiont बोलते हैं और fungus को हम mycobiont बोलते हैं. Algae exactly क्या करता है? Algae fungus के लिए food prepare करता है और उसे रिटर्न में क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने का मौका मिलता है, पानी मिलता है. करेक्ट? सो algae is phycobiont and fungus is mycobiont.
That brings an end to the chapter biological classification. We revised the key points of the particular chapter. हमने examples भी याद रखे हैं, and most importantly हमने fungus के 4 classes भी देखे हैं. So this is about the chapter bioclassification. Now guys, I am moving ahead with the next chapter, which is plant kingdom. Rishi sir, this is just to check if the screen is visible. Sir, is the screen visible? All right. So now we move ahead with the next chapter, which is plant kingdom. In this particular chapter, again, your focus should be on the key points, on the life cycle of the organism and the examples again. तो मैं आपको कुछ mnemonics देती हूँ. And bioclassification के लिए भी also, let me give you some quick mnemonics. Protista में जो class fungus में और protista में जो पहले I will talk about fungus के examples. So phycomycetes का examples you can Rhizopus, Albuco, and Mucor. Rhizopus is the bread mold. Albuco is the parasitic fungus. And M stands for Mucor. Ascomycetes की example हम याद रखेंगे N can plus Neurospora. Can में हमने क्या भर के रखा है? Can में हमने ईस्ट भर के रखा है और पेनिसिलियम भर के रखा है. So you can remember the example as can में क्या रखा है? ईस्ट एंड पेनिसिलियम. बसीडियोमाइसीट्स के एग्जांपल्स याद रखने के लिए एक दूसरा mnemonic बताती हूँ. You can remember this as आज मैं रही whatever. आज मैं. As you all know, it's a mushroom. So remember आज agaricus, मैं mushroom. उससे Us refers to Ustilago. Se refers to smut. So याद रखो Ustilago is nothing but smut. परेशान रही या परेशान रहा. परेशान refers to Puccinia. And रहा या रही refers to rust. So आज मैं उससे परेशान रही. आज is agaricus. मैं is mushroom. Us is Ustilago. Se is smut. परेशान रहा या रही. परेशान is Puccinia, and that comes in the category of rust. That is raha rahi. को हम कैसे याद रखेंगे? Rust. Talking about examples of deuteromycetes, you can simply remember this as cat. Deuteromycetes के लिए क्या याद रखोगे आप? Cat. C for Coletotrichum, A for Alternaria, and T stands for Trichoderma. So Coletotrichum, Alternaria, and Trichoderma. These are the examples of deuterium. So after we have studied about bioclassification, guys, now I move ahead with the next chapter, which is plant kingdom.
So coming back to plant kingdom chapter, the first part of the chapter is about the examples and the classification methods, natural system of classification, artificial system of classification, and phylogenetic classification. तो ये आप याद रखोगे, natural, then comes artificial, then comes phylogenetic classification, numerical taxonomy, chemotaxonomy, and cytotaxonomy. So these are the 5 methods of classification. और इस question आने का chance है. So artificial system, whereas natural system feature but also internal features. उसके बाद आया phylogenetic, which takes care about the ancestral history, evolutionary relationship. Numerical taxonomy आज का सबसे latest method है, जहाँ पे codes assign करते हैं. And chemotaxonomy, as the name says, is something to do with chemicals. And cyto, as the name says, is something to do with cell. The cell ka constituents and all. Okay. Now, our NEET paper mein, there is one question on talking about gamous and oogamous, correct? So let's see which are the examples of isogamous. The examples of flagellated isogamous is Eulothrix. Non-flagellated is Pyrogyra. And oogamous is Volvox and Fucus. So this is the example of isogamous and Eulothrix, isogamous non-flagellated Eulothrix, and oogamous ka example Volvox and Fucus, which is anisogamous Eudorine. फिर एक है anisogamous और तीसरा है oogamous. Diagrams, Volvox, you can see the filamentous algae. Then एक question आने का chance है, that is, which is the brown algae having air bladder in it? तो कौन सा brown algae है जिसमें air bladder है? The answer for that is Fucus. Fucus has air bladder. This is an important question. Then, which is the brown algae which shows branching and it shows a special pattern which is called dichotomous branching. That is dividing into 2 every time. That is called dichotomous branching. Okay. So, Fucus and Dictyota are the examples to be remembered. Diagram based question. और आप देख सकते हो कि they have shown laminaria का frond, stipe and hold fast. Stipe is nothing but a connection or a stalk. Hold fast is something जिससे वो substratum को attach करेगा और वो जो leaf like structure आपको दिख रहा है, that is the frond. So there is stipe, frond and there is hold fast. Talking about red algae, they have shown Porphyra and Polysiphonia. You can make out Polysiphonia is little more advanced, correct? Now, economic importance पे questions आते हैं हर बार, जैसे कि which are the marine algae which are used as food? तो आप क्या लिखोगे? आपके options में क्या होगा और आप क्या ढूंढोगे? You will search question. S stands for sargassum. P stands for Porphyra. And L stands for laminaria. तो आप SPL, LPS,
जैसे भी याद रखना है, you can also remember as please, PLS, please. Porphyra, laminaria, and sargassum. Then, another important question. Which is the hydrocolloid which is obtained from brown algae? The answer is algin. And which is the one obtained from red algae? It is keratin. How to remember this? इसको भी याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है. You can remember as BARC. Bombay, हम बोलते हैं ना BARC. That is nothing but Baba Atomic Research Center. B stands for brown algae. उसका example is algin. R stands for red algae. उसका example is keratin. So brown का example is algin. Red का example is keratin. These are nothing but two hydrocolloids. And the third important example again is, from which species do you get agar? So remember gully gully. Gully gully stands for Gracilaria as well as Geridium. तो Geridium और Gracilaria से हमें क्या obtain होता है? Agar. So revise this examples very well. Which one is used as food? Then which is the one used to make agar? And apart from that, which are the hydrocolloids obtained from brown as well as red algae? Then guys, we come to a table which shows us the differentiation between these three algae. I'm talking about the table 3.1. और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें इसके सारे कैरेक्टर्स देते हैं. So I would recommend that you better study this particular table very, very well. So which are the pigments of green algae? Chlorophyll A, chlorophyll B. The store of food is in the form of starch. Cell wall is in the form of cellulose. And this is the very brackish talking about along with so we were discussing the algae table, pigments, the stored food, the cell wall, and the flagella. Rhodophyceae, commonly called red algae, the pigments in them is chlorophyll A and chlorophyll D, along with phycoerythrin. R phycoerythrin नाम का एक pigment है, which is what gives red color to it. The stored food material is Floridian starch. कैसे याद रखने का आपको? Starch, laminarin starch, Floridian starch. Cell wall, in case of chloro, was made up of only cellulose. Pheomate is cellulose plus algin, and rhodomate is cellulose plus pectin plus polysulfate esters. So it is cellulose, pectin,
as well as polysulfate esters. Flagella is absent in them because the rhodophysi cannot move. They are non-motile. So flagella is absent. Chloro was the only one जो ज़्यादा करके fresh water में होता है, whereas Fluorodo they are found more in sea water, brackish water. तो again I'm telling you कि ये table अच्छे से करना, इस पे question आने का highest chances है. Algae के बाद now we discuss about bryophytes. They are correctly called as amphibians of plant kingdom. Why are they called as amphibians? Because actually they live in soil, but they also need water for fertilization. So, which is why they are called as amphibians of plant kingdom. I repeat, ये लोग soil में रहते हैं, पर पानी चाहिए इनको. यानी इसके fusion के लिए, sexual reproduction के लिए they require water, which is why they are correctly called amphibians of plant kingdom. Plants की life cycle में there are always two stages. One is called gametophyte and the other is called sporophyte. तो इनमें कौन सा dominant है? Ma'am, your screen is not visible. Okay, sir, just 1 minute. Yes, ma'am, sure. Yes, now it is visible. Visible? Yeah, thank you. Yes, ma'am. Sorry, there's a little this is happening. Talking about the life cycle of bryophytes, I was telling you all that gametophyte and sporophyte are the two distinct stages. So at the end, I will explain to you the life cycle in detail for pterido as well as gymnosperm. But just to know, which is the more dominant plant body, it is gametophyte. Gametophyte नाम क्यों रखा है? Because it's a gamete producing plant body. ये हमेशा haploid होता है. By the way, the male sex organ is called antheridium, and the female sex organ is called archegonium. Antheridium is club-shaped, something like this. आप जब कार्ड्स खेलते हो, पत्ते खेलते हो, तो ये जो club-shaped होता है ना, ये antheridium होता है इस तरह से. और आप देख सकते हो कि मैं anthrozoids draw कर रही हूँ. What I've drawn are the anthrozoids, which are flagellated. Okay, just showing you in different colors so that it got better. So that color thing, just club shape, like this, is the antheridium, and the black color flagellated things that you see are the anthrozoids, male gametes. As archegonia. What is the female flash-shaped body called? Archegonia. And inside that, inside the archegonia, there is one single egg. So basically, anthrozoids क्या करेगा? पानी में swim करेगा, and after swimming, it will try to reach the archegonia. All right? Fertilization will occur, and after fertilization, what is going to be formed is zygote. Zygote gives rise to sporophyte. तो exactly क्या हो रहा है? Gametophyte से sporophyte, वापस gametophyte. This keeps on happening alternately. ये होते ही रहेगा इस तरह से. इसी को हम alternation of generation बोलते हैं.
Gametophyte से sporophyte, वापस gametophyte. This is called as alternation of generation. By the way, these bryophytes are divided into further two classes, and that is liverworts and mosses. Liverworts को हम lower type of bryophytes बोलते हैं. It's a primitive member, whereas mosses are more advanced. So they are the higher type or the higher class. Liverworts have a distinct character, and that is they show something which is called gemma cup. I mean, they show gemma. What is gemma? It's a green color, asexual bud. Green color के छोटे छोटे इस तरह से बड होते हैं जिसे हम जेमा बोलते हैं, और ये कप शेप स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसे हम जेमा कप बोलते हैं. So inside the gemma cup, there are these small buds which are produced, green buds, which are called gemma. Correct? और यही जेमा डिटैच होके नया प्लांट बॉडी बनाता है. Similarly, we discuss about mosses. So mosses are more advanced, little more advanced, I would rather say. And the gametophyte here shows two different stages. So in case of mosses, gametophyte shows two different stages. One is called protonema stage, other is called leafy stage. याद रखना बायोलॉजी में जब भी आप वर्ड नीमा या नेमा रेफर करते हो, नीमा या नेमा का मतलब है fiber like structures. Since this is formed in the early stage, we call it protonema. And which is the other stage? So the gametophyte is divided into two stages. One, which is correctly called as the protonema stage, and the other is called leafy stage. Proto means pehle, nema means fibers. So actually ये लोग green color के branched filamentous fibers होते हैं इस तरह से. It's like धागा types. और इसी पे छोटे छोटे spores develop होते हैं. So इसी प्रोटोनिमा में छोटे छोटे spores develop होते हैं, by the way. इसी प्रोटोनिमा में छोटे छोटे buds develop होते हैं, and that is the one which gives rise to leafy stage. Leafy stage is the one which has spirally arranged leaves like this, and it is the one which has multicellular rhizoids, bryophytes, and we discussed in detail about liverworts and mosses. Mosses के examples क्या है? याद रखना SPF. जैसे हमारा जो सनस्क्रीन लोशन होता है उसमें आपने देखा होगा हमेशा SPF लिखा होता है. Here, what does SPF stand for? S stands for sphagnum, F stands for funaria, and P stands for polytrichum. Sphagnum, polytrichum, and funaria. These are the three prominent examples of mosses. Now guys, I'm going to discuss pteridophytes with you. इन्हें हम
रेप्टिलियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का. But another common character that it shows with bryophyte is that even they require water for fertilization. इनमें भी fertilization के लिए पानी चाहिए. So let's discuss about pteridophytes a little more in detail. छोटे leaves को हम microphylla बोलते हैं, which is seen in Selaginella. Large ones are seen in case of fern. It can be asked in match the following, correct, incorrect, or direct question. So once again, example of small leaves or microphylla, Selaginella. An example of large leaf is or macrophyll is fern. Also, they form a leaf-like appendage, which is called sporophyll. And कभी-कभी ये sporophyll distinct structures में develop होता है, which is called as cones, also called strobili. और इसकी examples are super duper important. It is already P by Q. So, which are the pteridophytes which show cones or strobili? The answer is Selaginella as well as Equisetum. The one which is having chotu leaves, they are microphylls. And the one which shows large leaves, example is fern. So chota leaves, microphylls, Selaginella. Large leaves seen in case of ferns. Examples of the one showing conidia or strobili, Selaginella and Equisetum. आप देख सकते हो इक्विसेटम के डायग्राम में वेरी प्रोमिनेंटली स्ट्रोबिलस बताया है, कोन्स बताया है. सेलाजिनेला में भी होता है, बट दे हैवंट शोन प्रॉपर्ली. ओके, में भी कोन्स होता है. फर्न देख सकते हो हैविंग माइक्रोफिल्स, एंड यू कैन सी साल्विनिया व्हिच इज एन एक्वेटिक प्लांट. प्लीज माइंड इट, साल्विया अलग होता है और ये साल्विनिया अलग होता है. इनके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इनमें भी दो प्रोमिनेंट स्टेजेस होते हैं. वन इज द गैमेटोफाइट एंड द अदर इज स्पोरोफाइट. बट व्हिच इज द डोमिनेंट कैरेक्टर इन देम? इट इज नथिंग बट द स्पोरोफाइट व्हिच इज द डोमिनेंट कैरेक्टर हियर. और इनमें प्रॉपर लीव्स होता है, प्रॉपर स्टेम होता है, प्रॉपर रूट्स होता है. सो ये पहले प्लांट्स है जिनमें प्रॉपर ब्रायोफाइट्स में सब कुछ जैसा था, मतलब दे हैड स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. बट फॉर टेरिडो दे हैव एवरीथिंग प्रॉपर. ओके, दे हैव प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स. एंड एज आई सेड द डोमिनेंट फीचर इज स्पोरोफाइट. इनकी गैमेटोफाइट को एक नाम दिया गया है व्हिच इज प्रोथैलस. इट्स अ ग्रीन, it's a photosynthetic thalloid body which is called prothallus. Okay, again they have male sex organ जो मैंने आपको बताया था club shaped, which is antheridia, जिसमें anthrozoids होते हैं. And they have flash shaped archegonia जिसके अंदर egg होता है. इनमें भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए. They also require water for fertilization. Now, most of the pteridophytes are homosporous. Maximum मैं बोलूंगी homosporous है, but दो ही है जो heterosporous है. हमने डिस्कस किया था दो ऐसे examples, right? So the two of them which are heterosporous, one is Salvinia, other is Selaginella. They both are heterosporous. What do you mean by heterosporous? They produce two different type of spores, microspores and megaspores. Okay, इनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों होता है. यही स्पोर आगे जाके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं. ओके, नाउ एक यूनिक कैरेक्टर जो आपको पता होना चाहिए, हेटेरोस्पोरी की वजह से सीड डेवलपमेंट की शुरुआत हुई.
तो ये सीड डेवलपमेंट का प्रीकर्सर इवेंट आपको कहाँ दिखता है? प्रीकर्सर यानी पहले। सो ये प्रीकर्सर एनवायरनमेंट या प्रीकर्सर हैबिट आपको कहाँ नजर आ रहा है? टेरिडोफाइट्स में नजर आता है, राइट? एंड उनमें क्या होता है? अनदर पेक्युलर कैरेक्टर इज दैट द फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, इट इज रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, और इस गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल मोर इन डिटेल. जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बनाकर वेयर? Yes, you are right. It occurs in the female gametophyte. And female gametophyte कहाँ present है? Parent sporophyte. This is a precursor event for the seed habit. ये PYQ है, and this again is very, very important. Lastly, the examples. There are 4 classes. Gymnosperm का एक class है, which is Psilopsida, and the example is Psilotum. उसी तरह Lycopsida, the example is Lycopodium and Selaginella. Spinopsida, the example is Equisetum. And Pteropsida, the example is Dryopteris, Pteris, and Ediantum. So I hope you're clear about algae, bryophytes, and pteridophytes. Lastly, we move to gymnosperms. The word gymno refers to naked, and the word sperma refers to seed. तो ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स है जिनमें सीड्स विजिबल होते हैं. आपने देखा होगा कि साइकस, स्पाइनस, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं. ओके, इनमें ऑब्वियसली रूट स्टेम लीफ तो प्रॉपर होगा ही. वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिक्वोइया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज नथिंग बट द जायंट रेडवुड. वी कॉल इट एज द जायंट रेडवुड ट्री. So sequoia is a giant redwood tree. All right, that's the tallest gymnosperm. फिर अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि there is something called mycorrhiza. तो फंगस जब हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएट होता है, we call it mycorrhiza, and one such example is spinous. साइकस के रूट्स को हम कोरलोइड रूट्स बोलते हैं, और पाइनस के रूट्स के अंदर क्या मतलब देखो क्या? माइकोराइजा. इनका स्टेम ब्रांच या अनब्रांच हो सकता है. अनब्रांच का एग्जांपल इज साइकस, एंड ब्रांच का एग्जांपल इज पाइनस एंड सीड्रस. टॉकिंग अबाउट देयर अडैप्टेशंस, अलग अलग तरह के अडैप्टेशंस हैं, जैसे कि संकन स्टोमेटा होता है. दे आल्सो हैव नीडल लाइक स्ट्रक्चर. The idea is to conserve water, more and more water. Now going to discuss the life cycle of gymnosperms. So remember, all the gymnosperms are heterosporous. Okay, pteridophytes mein they were mostly homosporous, but meaning they produce 2 different types of spores. One is microspores, other is megaspore. Correct? Microspore and megaspores. So सबसे पहले इन सबसे highest structure कौन सा होता है? They have cone. We call it cone or we call it strobili. Cone के अंदर, inside the cone, there is something called sporophyll. Cones or strobili. Strobili in turn has sporophyll. Sporophyll contains sporangia. So there is cones or strobili, then there is sporophyll. Inside the sporophyll there is sporangia. Sporangia के अंदर क्या होगा? Obviously spores.
and the spores will germinate to give rise to the male or the female gametophyte. So can I say basically sporophyte से क्या बन रहा है finally? Gametophyte. So cone or strobili in turn consist of sporophyll. Sporophyll in turn consists of sporangia. Sporangia will produce spores and spores will give rise to gametophyte. अगर मैं इसे मेल और फीमेल के साथ कनेक्ट करती हूँ तो हम क्या बोलेंगे? मेल कोन और मेल स्ट्रोबलाई. बाय द वे इस मेल कोन और मेल स्ट्रोबलाई को एक और नाम दे सकते हैं हम. We can call it microsporangiate. Okay, microsporangiate. This in turn consists of sporophyll, microsporophyll. Then it has microsporangia, which will have microspores. And the spores will germinate to give rise to the male gametophyte. उसी तरह आप फीमेल वाला पार्ट कनेक्ट करके देखो. फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रोबलाई, megasporangiate, macrosporangiate, in turn consist of megasporophyll, which is nothing but megasporophyll, which in turn contains megasporangia. Megasporangia is nothing but इसी के अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे that will give rise to a female gametophyte. So guys, जब हम मेल फीमेल पार्ट के बारे में बोलते हैं तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, so I will just write a flow chart to explain this. तो हमने क्या बोला? कोन्स का आई एम राइटिंग फॉर फीमेल कोन, also called female strobili, also called megasporangiate. मेगा को हम मैक्रो भी बोल सकते हैं. So it is megasporangiate or macrosporangiate. In turn, consist of megasporophyll. और ये मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया. What is the other name for the megasporangia? We can call it ovule. Okay. By the way, ovule क्या है? It is nothing but nucellus plus integument. So ovule is the nucellus plus integument. All right. फिर यही मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस है उसी के अंदर क्या बनने वाला है? मेगास्पोर. कैसे बनता है? कौन से प्रोसेस से बनता है? मियोसिस से बनता है. These megaspores, actually speaking, there are 4 megaspores formed. आपको पता है meiosis gives rise to 4 haploid cells. So there are 4 megaspores. चारों में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है. This megaspore then gives rise to the female gametophyte. By the way, the female gametophyte here is also called as the endosperm. The endosperm यहाँ पे haploid होता है. Okay, female gametophyte होता है, इसको haploid होता है. और इसी के अंदर 2 या ज्यादा आर्कीगोनिया प्रेजेंट होंगे. Inside this female gametophyte, there are 2 or more archegonia. And inside the archegonia, what's present? Egg cell. So inside the nucellus, you can see that this female gametophyte shows these 2 red color structures which I'm drawing. These are called archegonia. और इसी के अंदर एक egg cell होगा.
This is how the structure of female gametophyte looks like. When the spore comes, pollen grain rather, it falls on the pollen chamber. फिर एक pollen tube बनेगा, which will carry the male gametes. One of the male gametes will fuse with one of the egg cells. The other will degenerate. डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा. तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आती है, दो की जरूरत क्या है? इट इज प्रेजेंट एज अ बैकअप. ओके, उसे एक्स्ट्रा बैकअप के फॉर्म में रखा जाता है. सो ये जो हमने ड्रॉ किया और टेबल बनाया, अभी फ्लो चार्ट बनाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से आप इसका लाइफ साइकिल अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. Lastly, angiosperms है. Angiosperms में you just need to know the example. सबसे छोटा angiosperm है Wolffia और सबसे बड़ा है Eucalyptus, which is around 100 meters. Wolffia is very small, just 1 millimeter. Eucalyptus is 100 meters. So here we finish the chapter Plant Kingdom. I am now moving to the next chapter, which is morphology. I'm just sharing the screen with you all. So when it comes to morphology, हमें हमेशा यही टेंशन होता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स को हम कैसे याद रखेंगे. So don't worry, we have a few mnemonics. कुछ याद रखने के तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. It is very very simple. तो इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हम ये सारे एग्जाम्पल्स को रिवाइज करेंगे. कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, कैसे एसोसिएट करना है वो बता दूँ. So firstly, the first part of the chapter is about root, stem, leaf. There are 3 different types of roots. Taproot, then comes fibrous root, and then comes adventitious root. Taproot ka example is mustard. Sorry guys. The example of taproot is mustard. Fibrous ka example is wheat. And adventitious you can remember as grass, monstera, and banyan tree. So example of taproot, there are many more. NCERT में एक example दिया है. Taproot का example क्या है? Mustard. What is the example for fibrous? Wheat. And what is the example given for adventitious? It is grass, monstera, and banyan. These are the 3 examples of adventitious roots. Now we discuss about, or we rather talk about, the stem. Stem में आपको पता है that it has nodes and internodes. And the main function of stem is to spread out the branches, which has leaves, flowers, fruits. और उसके अलावा वो water minerals भी conduct करता है, food भी conduct करता है, और कुछ extra functions perform करने में भी help करता है. Talking about leaves. Leaf में कुछ modifications होते हैं leaf base में. So firstly, leaf के 3 parts होते हैं. One is the leaf base, second is petiole, and third is lamina. और ये leaf base में भी हम कई बार अलग अलग modifications देखते हैं. There's something called pulvinus. जब leguminous plants में leaf base swollen होता है, we call that as pulvinus. Whereas कई बार monocots में it will show a sheath
a covering which may be either totally covered or it may be partially covered. And what is seen in case of dicots? It is showing some leaf-like structure which are called stipules. तो इनमें या तो sheath होता है, I mean the leaf base is modified into sheath, stipules, or it can be palmaris. ये terms को याद रखना, MCQs में it can be asked as a direct question. Venation, you all know that there are two types, verticulate and parallel. Types of leaves, it can be simple or it can be compound. सिंपल मतलब एक सिंगल लीफ होता है और कंपाउंड मतलब जब बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, एक ही पत्ते पे जब बहुत सारी पत्तियां होती है तो उसे कंपाउंड लीफ कहा जाता है. पाइनेटली कंपाउंड का एग्जांपल इज नीम एंड पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जांपल इज सिल्क कॉटन. कैसे याद रखोगे? नीम का पत्ता देखा है, नीम के पत्ते पे कितने सारे छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं. So that is pineally compound. और वो जो midrib आप देखते हो, that is called rachis. Because वो हाथों की जैसे होते हैं, हमारे palm जैसे होते हैं. That's why the name is palmately compound. That is seen in case of silk cotton. आप देख सकते हो सिल्क कॉटन में सारे एक पॉइंट, एक जंक्शन, एक टिप पे अरेंज होते हैं. सो इट इज कॉल्ड palmately compound. It can be alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy और bold phyllotaxy. Alternate के examples are mustard and sunflower. Opposite का example is calotropis and guava. कैसे याद रखने का? गांव में लोग ओप्पो से कॉल करते हैं. गांव मतलब गांव इज गुआवा, लोग ओप्पो से कॉल करते हैं. ओप्पो से ऑपोजिट याद रखो एंड कॉल से कैलोट्रोपिस याद रखो. सो गांव में लोग ओप्पो से कॉल करते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर ऑपोजिट. ऑल्टरनेट को याद कैसे रख गया? चाइना रोज, जस्ट रिमेंबर CMS, और यू कैन इवन रिमेंबर एज MSC. मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज. Bold का एक ही एग्जाम्पल है, synonymic required for that, and that is Alstonia. So these are the examples of phyllotaxy, which is nothing but plants का arrangement, पत्तों का arrangement, leaves का arrangement on the stem. Now we discuss about inflorescence, जो दो टाइप का होता है, racemose, cymose, and we discuss about flower का structure. तो कोई भी flower उसका बेस हमेशा swollen होता है, and that swollen base is called thalamus or receptacle. Okay. Symmetry की बात करें तो it can show actinomorphic symmetry, it can be zygomorphic symmetry, or it can be even asymmetry, मतलब no proper symmetry. Actinomorphic, zygomorphic, asymmetry. Actinomorphic examples है mustard, datura and chili. Zygomorphic examples है pea, gulmohar, bean and cassia. अब इसे याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. वी रिमेम्बर दिस थ्रू अ शॉर्ट ट्रिक गाइस. You can remember this as chili. Chinese धतूरा खाकर मस्त एक्टिंग करता है. चिली चाइनीज धतूरा खाकर मस्त एक्टिंग करता है. So the examples are chili. Chinese refers to China rose. Datura obviously refers to datura. Mustard भी याद रख सकते हो. Acting से हमें क्या याद रहेगा? Actinomorphic. Acting क्या बताता है अपने को यहाँ पे? That this is actinomorphic. So chili
Then China rose, datura, mustard. ये सारे एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हैं. अब हम जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स याद रखते हैं. The examples are pea, gulmohar, bean, and cassia. So to remember this, we will remember this as pea ने गुलमोहर को कैसे जगाया? पी ने गुलमोहर को कैसे जगाया? The answer is बीन बजाकर. पी ने गुलमोहर को कैसे जगाया? बीन बजाकर. तो पी, गुलमोहर, कैसे से हम कैशिया याद रखेंगे और बीन बजाकर. बीन भी याद रखें. So पी, गुलमोहर, cassia and bean are examples of what? Zygomorphic. Lastly, asymmetric. कैसे याद रखेंगे? अब अगर किसी की आंखों की सिमेट्री ठीक नहीं है, जो स्क्विंट होते हैं, राइट, हम क्या बोलते हैं? उनकी आंखों की सिमेट्री ठीक नहीं है, उन्हें हम काना बोलते हैं, राइट, हिंदी में. सो रिमेंबर, एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या है? काना की जगह हम क्या बोलेंगे? कैना. So the example is कैना. So these are examples of actinomorphic, zygomorphic and asymmetric symmetry. इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, rather आए हैं. Either this can be asked in match the following or can be asked as straight questions. फिर हम बात करते हैं about the conditions of ovary, the classification based on ovary का position. It can be hypogynous, it can be perigynous or it can be epigynous. हाइपोकाइनस सुपीरियर ओवरी बताता है. मतलब क्या? ओवरी सबसे ऊपर होगा. अगर आप डायग्राम देखोगे, यू कैन सी ओवरी ऊपर है और बाकी सारे फ्लोरल वॉल्स उसके नीचे है. सो ओवरी सुपीरियर. करेक्ट, इट इज सुपीरियर ओवरी, हाइपोकाइनस कंडीशन. एंड इसके एग्जांपल्स कैन बी रिमेंबर्ड एज BMC. BMC stands for brinjal, mustard as well as China rose. Brinjal, mustard, China rose, BMC. जैसे PMC होता है वैसे BMC होता है. So hypogynous is BMC. Perigynous के लिए हम एक याद रखेंगे, एक बच्चा था छोटा सा, जब उसका बर्थडे आया तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज किया था. तो पेरेंट्स प्लान्ड पार्टी फॉर रोजी. बाय द वे, बच्चे का नाम क्या था? रोजी. तो जो रोजी नाम की छोटी सी लड़की थी, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा ने उसकी बर्थडे पार्टी, छोटी सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की थी. सो पेरेंट्स प्लान्ड पार्टी फॉर रोजी. पेरेंट्स प्लान्ड पार्टी से हम क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे पी, प्लम, perigynous, and this is nothing but rose. So these are examples of perigynous: peach, plum, rose. Plum, peach, rose. These are three examples of perigynous. Parents planned party for Rosie. Parents से perigynous याद रखो, plant से plum याद रखो, party से peach याद रखो और Rosie से rose याद रखो. Lastly, the examples of epigynous condition. एपिगाइनस का एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप CGS यूनिट याद रखो. जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक होता है SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट. सो CGS, C for cucumber, G for guava, and S stands for sunflower. The ray florets of sunflower: cucumber, guava, and ray florets of sunflower. These are the examples of epigynous condition. So we discussed symmetry and we discussed the position of the floral whorls with respect to the ovary.
हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस एंड एपिकाइनस, ठीक है। नाउ इसके बाद हम एस्टिवेशन की बात करते हैं, उसके भी एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। आप ये डायग्राम पे फोकस कर सकते हो। पहले वाले 4 टाइप के एस्टिवेशंस है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, imbricate और वेक्सिलरी। वाल्वेट में आप क्या देखते हो, दैट द पेटल्स आर क्लोज टू ईच अदर, दे मे इवन टच ईच अदर बट दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। बाजू बाजू में होते हैं पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, दैट इज व्हाट इज वाल्वेट। ट्विस्टेड में क्या होता है, अगर आप देखोगे उसका डायग्राम, एक एंड अंदर की तरफ है, एक एंड बाहर की तरफ है, one end inside, one end outside. So it's like अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इस टाइप के अरेंजमेंट को ट्विस्टेड बोलते हैं। थर्ड इज इम्ब्रिकेट। यहाँ पे कोई प्रॉपर स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है अरेंजमेंट का, सो वी कॉल इट इम्ब्रिकेट। वेक्सिलरी में देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट जहाँ पे सबसे बड़े पेटल को हम स्टैंडर्ड या विंग बोलते हैं, दो लैटरल को हम विंग्स बोलते हैं, और जो बोथ शेप होता है उसे हम कील या करीना बोलते हैं। सो देयर इज स्टैंडर्ड और विंग, स्टैंडर्ड और वेक्सिलम, सॉरी, it is called standard or vexillum. The two lateral ones are the wings, and the two both shape structures which are fused are called as keel or carina. अब ये सारे के एग्जांपल्स कैसे रखेंगे, वेलवेट का तो एक ही एग्जांपल है, दैट इज कैलोट्रोपिस, तो वो हम इजीली याद रख सकते हैं, वेलवेट, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड के एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे हम बोलेंगे चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। Chinese lady has twin children. Chinese refers to China rose. Lady refers to lady finger. Twin से हम twisted estivation याद रखेंगे, and children से हम cotton याद रखेंगे. So, China rose, lady finger, and cotton. These are the examples of twisted estivation. Imbricate के examples है cassia and gulmohar. Cassia and gulmohar are examples of imbricate. And lastly, the examples of vexillary or papillaceous are all the pulses like pea, etc. Those comes under pea, bean, ये सब vexillary के examples हैं. So valvate, calotropus, twisted, Chinese lady has twin children, imbricate, you can remember cassia and gulmohar, CG याद रखो, और lastly vexillary, सारे leguminous plant जैसे कि pea, bean, etc. तो यहाँ पे हमने बात की अबाउट एस्टिवेशन। फिर आता है कुछ कंडीशन, स्टेमन्स के कंडीशंस, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड मोनोअडल्फस, डायअडल्फस एंड पॉलीअडल्फस। अडल्फी क्या होता है, जब एंथर्स फ्री होते हैं बट जब उनके फिलामेंट्स फ्यूज्ड होते हैं तो हम उसे अडल्फी बोलते हैं। इट कैन बी मोनोअडल्फस, diadelphous, or it can be even polyadelphous. मोनो का एग्जाम्पल है चाइना रोज, डायडेल्फस का एग्जाम्पल है पी, और पॉली का एग्जाम्पल है सिट्रस। Talking about gynoecian, two examples to be remembered again, syncarpus और एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स याद रखना। एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स है लोटस एंड रोज, syncarpus के एग्जाम्पल्स आर मस्टर्ड एंड टोमेटो।
तो कैसे याद रखें हम ये एपोकार्पस और सिनकार्पस के एग्जाम्पल्स? ये भी ऑलरेडी पास पेपर में आ चुका है। सो कैसे याद रखेंगे हम? अपोलो हॉस्पिटल, आपको पता है कि हर जगह पे अपोलो हॉस्पिटल होता है, उनके चेन्स, बहुत सारे चेन्स हैं। सो ये जो अपोलो हॉस्पिटल है, उन्होंने क्या किया है, वो अपने पेशेंट्स को एक अलग तरीके से ग्रीट करते हैं। वो अपने पेशेंट्स को क्या देते हैं? लोटस और रोज, और बोलते हैं ठीक हो जा मामू। सो अपोलो हॉस्पिटल गिव्स लोटस एंड रोज। अपोलो से याद रखोगे एपोकार्पस, और सिन एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए रिमेंबर मिस्टर टॉम, मिस्टर इज मस्टर्ड, टॉमस टोमेटो. So mustard and tomato are examples of syncarpus, and lotus and rose are example of apocarpus. ठीक है? लास्टली हम प्लेसेंटेशन की बात करते हैं. प्लेसेंटेशन अलग अलग टाइप के होते हैं: मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल. मार्जिनल में क्या होता है? द ओव्यूल्स, सीड्स आर टुवर्ड्स द मार्जिन, and the very prominent example that you can see in the diagram also is P. Axial में क्या होता है? The ovules are present towards the axis. Okay, axial, right in the center towards the axis. So we call it axial. और axial को याद रखने के लिए TLC याद रखो. आपको पता है TLC टीवी पे एक चैनल भी होता है. इससे हम टोटल लंग कैपेसिटी भी याद रख सकते हैं, कोई भी तरीके से याद रख सकते हो. बट यहाँ पे TLC का मतलब क्या हुआ? TLC here stands for tomato, lemon and China rose. What is TLC here? Tomato, lemon and China rose. Then talking about parietal. Parietal के examples. By the way, parietal का एक और character जो बहुत ही important है, इनकी ओवरी वन चेम्बर्ड होती है, बट दो चेम्बर्ड अपीयर करती है बिकॉज ऑफ फॉल सेप्टम. सो पैराइटल के एग्जांपल्स कैसे याद रखोगे? माँ, माँ कैसी है? परी जैसी. सो परी मतलब पैराइटल, माँ मतलब मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. फ्री सेंट्रल में क्या होगा? ओव्यूल्स आर राइट इन द सेंटर एंड देयर इज नो सेप्टा. याद रखो डीपी. फ्री सेंट्रल का एग्जांपल क्या है? डीपी, डिस्प्ले पिक्चर, दीपिका पादुकोण, दिशा पटनी. जैसे याद रखना वैसे रखो, बट प्लीज रिमेंबर इट्स डायंथस एंड प्राइमरोज. डायंथस एंड प्राइमरोज. लास्टली बेसल. बेसल के एग्जांपल्स है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. सो द गुड वे टू रिमेंबर, सूर्य देवता जो है वो क्या करते हैं? वो मैरी को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं. So sun blessed Mary. Sun is sunflower, blessed is basil, and Mary is nothing but marigold. Marigold. ठीक है? तो this completes everything about flower. अपने सारे examples हो गए. Fruit में there's not much to remember. Examples की बात कर रही हूँ. Just remember about mango and coconut, which is called drupe, because ये एक seeded होते हैं, इनमें superior ovary होता है, and it is monocarpellary. So these are the three conditions for it to be called as a drupe. Mango का कौन सा part edible होता है? This can be a good question. It is a mesocarp, which is fleshy and edible. And coconut में mesocarp तो fibrous होता है, endocarp, mesocarp सब कुछ खाते नहीं हम. जो मैंगो कोकोनट में खाते हैं और जो पीते हैं वो बेसिकली नारियल पानी होता है. नारियल पानी इज द लिक्विड एंडोस्पर्म, और मलाई जो हम खाते हैं वो सॉलिड एंडोस्पर्म. वही एक एडिबल चीज होता है. कोई भी पार्ट हम नहीं खा सकते. ठीक है? वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रूट. अभी सीड के बारे में गाइस, रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ सीड्स. यू ऑल कैन सी अ diagram of monocot seed given. That's an important diagram. Which are the two structures which are fused in case of monocot seed? It is seed coat and fruit wall. इनमें seed coat और fruit wall दोनों fused होता है. Okay?
Then they have a shield-shaped cotyledon, and that shield-shaped cotyledon is called scutellum. Radical और plumule होता है. Radical को कवर करने वाले शीट को कोलियोराइजा बोलते हैं, और प्लिम्यूल को कवर करने वाले शीट को कोलियोप्टाइल या सीलियोप्टाइल बोलते हैं. So there's coleorhiza and there's coleoptile, and the shield-shaped cotyledon is called as scutellum. Now coming lastly to the families वाला part, which is very very important. हमारे नीट सिलेबस में और भी 4 families को ऐड किया गया है, and I'll be covering up even that part. तो एनसीईआरटी में जो सोलानेसी दिया है उसके बारे में बात करते हैं. सी स्पेसिफिकली आपको फैमिलीज में उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे फोकस करना है. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. मेनली इट कम्स ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स. सो लेट अस रिमेंबर द फ्लोरल कैरेक्टर्स फॉर सोलानेसी फैमिली. सोलानेसी को याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? एग्जाम्पल बटाटा. सो इट्स अ बटाटा फैमिली. ओके, ये जो सोलानेसी फैमिली है इसमें सिमेट्री कैसा होता है? इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री. इट इज बाइसेक्सुअल, व्हिच मींस एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होता है. इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम गाइनोशियम होता है. इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं. यू ऑल नो कैलिक्स इज रिटन एज के, कोरोला इज सी, एंड्रोशियम इज ए, एंड द गाइनोशियम इज जी. करेक्ट? ये जो सोलानेसी था, पोटैटो था, वो दूसरा सेकंड रैंक पे आया था. सो उसका G2 याद रखोगे. ओके, और बाकी कैरेक्टर्स याद रखने के लिए याद रखो कि अंबानी फैमिली के जितने भी कार्स है ना, उन सबका नंबर है 555. क्या नंबर है? 555. बोलो 555. फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मीनिंग K5, G5, E5. लेकिन फ्यूज्ड फ्यूज मैंने सिर्फ 2 ही बार बोला. मतलब कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड है, नॉट द एंड्रोशियम. और एक और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है इनके बीच में. इनका पेटल्स और करोला इज अटैच्ड टू द स्टेमन्स. और आई शुड पुट इट दिस वे कि स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, और इसे हम एपिपेटालस कंडीशन बोलते हैं. सो बटाटा जो था वो सेकंड आया था, इसीलिए G2. और इनकी गाड़ी का नंबर क्या है? 555. फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, राइट? And lastly, the examples of Solanaceae family, which is the food that is tomato, brinjal, potato, spice like chili, medicine like belladonna, ashwagandha, fumigatory like tobacco, and ornamental plant like petunia. ये हम कैसे याद रखेंगे? बेला नाम की एक लड़की थी. ये कहानी है 18th सेंचुरी की. तो उस टाइम पे ना लोग घोड़े हाथी पे सवारी करते थे. सो ये घोड़े पे जाती है, जिसे हम अश्व बोलेंगे, अश्व. सो बेला अश्व पे टोबैको, सब्जी और चिली लेने चली. इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ ताकि और बेटर याद रहे. बेला अश्व पे टोबैको, चिली और सब्जी लेने चली. बेला अश्व पे टोबैको, चिली और सब्जी लेने चली. बेला बेलेडोना, अश्व अश्वगंधा, पे पेटूनिया. टोबैको से डायरेक्टली टोबैको याद रख सकते हो, चिली से ऑब्वियसली डायरेक्टली चिली याद रख सकते हो. और सब्जी के 3 एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं: टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. So tomato, brinjal, potato, these are the 3 subsies. Correct? So here we complete everything which is given in the NCERT of morphology. Now guys, next I'm going to pick up the extra families जो हमारे syllabus में included है.
फैमिलीज को याद रखने का बेस्ट तरीका होता है फॉर्मूला याद। सो एक बार अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला आता है, आप फैमिली के सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और चीजें बताती हूँ, हाउ यू कैन रिकलेक्ट देम एंड हाउ यू कैन लर्न देम। तो जो फैमिलीज है, उसमें पहला फैमिली है कॉम्पोजिटे, which is nothing but Asteraceae family और sunflower family। ये मैं जब बता रही हूँ तो आप सनफ्लावर को विजुलाइज करना ताकि आपको ये चीज बेटर समझ पाओ। सो कॉम्पोजिटे और एस्टरेसी फैमिली, which is nothing but sunflower family। आपने देखा होगा कि सनफ्लावर में ना एक येलो कलर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और इंटर में एक छोटे होते हैं, जिन्हें हम फ्लोरेट्स कहते हैं। टू टाइप ऑफ फ्लोरेट्स, जैसे हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, एक जिसे हम बोलते हैं रे फ्लोरेट is at the periphery. This floret is right in the center. Ray floret obviously is yellow color. This floret is brownish black color. तो ये रे फ्लोरेट के क्या कैरेक्टर्स है? इसके हम दोनों फ्लोरल फॉर्मूलाज याद रखेंगे, रे फ्लोरेट के भी और डिस्क फ्लोरेट के भी। रे फ्लोरेट shows bilateral symmetry. Bilateral means zygomorphic, तो परसेंटेज बताएंगे। इनका कैलिक्स हेयरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होता है, which is called pappus. Calyx is modified into pappus. इनके कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, 5, और ये पेटल्स फ्यूज होते हैं, so we put in bracket. एंड्रोमेन्स होते हैं, सॉरी फ्लोरेट्स मेनली येलो कलर के जो रहते हैं, उनका काम होता है इंसेक्ट। तो एंड्रोशन डाइवर्शन इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन I'll share the screen again because the screen sharing has stopped. Rishi sir, I just want to confirm with you be visible. So the florets is another periphery. So zygomatry. Calyx is modified into pappus. 5 पेटल्स होते हैं, और जैसे मैंने बताया कि रे फ्लोरेट्स में ज्यादा करके इनके मेन काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम इतना रोल प्ले नहीं करेगा जितना कि कैलिक्स और कोरोला प्ले करता है। सो एंड्रोशियम इज एब्सेंट हियर, सो वी विल राइट इट A0. गाइनोशियम कैन आल्सो बी एब्सेंट, या फिर अगर प्रेजेंट होगा तो ये बाइकार्बोनरी होता है।
दो कार्पल्स होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं और इनमें सुपीरियर ओवरी होता है। उसी तरह अगर मैं डिस्क फ्लोरेट के कैरेक्टर्स की बात करूं, दे शो actinomorphic symmetry, radial symmetry. Calyx is modified into pappus. Corolla shows 5 petals which are fused. Androecium has 5 stamens which are also fused. And ये epicatalis condition बताता है, यानी stamens are attached to the petals. Gynoecium has 2 carpels which are fused with inferior ovary. It is inferior ovary for both the conditions, okay? Inferior ovary for both. In case it is present, it's inferior ovary. So अगर आप ये floral formula का याद रखते हो, तो आप इसके सारे questions आंसर कर पाओगे. Last इसकी examples कैसे याद रखेंगे? Examples are Bringraj. You know जो hair products होते हैं आयुर्वेदा में, hair products में Bringraj यूज करते हैं. फिर garden lettuce, lettuce बोलते हैं, lettuce leaves, which is nothing but salad. Safflower, sunflower, marigold, that is गेंदा, right? ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? दे आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पोजिटी और एस्टेरेसी फैमिली. तो ये था हमारा पहला फैमिली जिसका फ्लोरल कैरेक्टर हमने याद रखा, फ्लोरल फॉर्म हमने याद रखा. नेक्स्ट इज फैमिली ब्रेसिकेसी. एनसीईआरटी में ये फ्लोरल डायग्राम के रूप में दिया गया है. इसका फ्लोरल डायग्राम दिया. So we talk about Brassicaceae family, which is correctly called mustard family, also called crucifery. So Brassicaceae or crucifery are nothing but the examples. They are the family which is correctly called mustard family. Muri, Marathi में जो हम मोरी बोलते हैं, that is what is Brassicaceae. इसका symmetry is actinomorphic with radial symmetry. It shows bisexual condition. मतलब it is basically androecium gynoecium दोनों होता है. कैलिक्स में ना 4 सेपल्स होते हैं, पर 2 बाहर की तरफ है और 2 अंदर की तरफ है, तो हम K2+2 लिखेंगे. एक्चुअल 4 सेपल्स है, but they are just outside 2 inside, so we write it 2+2. कोरोना में 4 petals है, so we will call it as C4. Androecium has 6 stamens, 2 outside and 4 inside, so we write it 2+4. 4+2 क्यों नहीं? Because हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, so basically 2 stamens बाहर होते हैं तो वो पहले लिखेंगे, 4 स्टेमन अंदर होते हैं तो वो हम बाद में लिखेंगे. Gynoecium में 2 carpels है which are fused and it shows superior type of ovary. The examples include राई which is mori, फिर गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, cabbage, cauliflower, radish जिसे हम मूली बोलते हैं. All these are examples of Brassicaceae family. So इसका floral diagram हमारे NCERT में दिया गया है, so you can refer to that. उससे आपको सारे characters और examples भी अच्छे से याद रह जाएंगे. Then the next family is Malvaceae family. Malvaceae family is correctly called hibiscus family. Commonly हम इसे hibiscus family बोलते हैं. और हमारे एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. Malvaceae also shows actinomorphic symmetry. इसमें भी androecium gynoecium दोनों होता है, so basically ये bisexual होता है. इनमें टिपिकल पेक्यूलर कैरेक्टर क्या है कि कैलिक्स का एक एक्स्ट्रा वॉल होता है. an extra wall of calyx below which is called epicalyx, and that could be 3 to 8, anything between 3 to 8. there's an extra wall of calyx जिसे हम epicalyx बोलेंगे. कैलिक्स तो होगा बट उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेयर है epicalyx. Calyx has 5 sepals
Corolla has 5 petals. Androecium has infinite stamens. That's very, very, very important. It shows epipetalous type of condition. And there are 5 carpels. It is pentacarpellary with superior ovary. So ये जो infinite stamen है, ये इसका एक character याद रखना है. और यहाँ पे So let's quickly see the examples that we were discussing. China rose, which is nothing but hibiscus. Also, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ट्विस्टर एस्टिवेशन में चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन. तो ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर. उसके अलावा you can remember even one more, that is fibers के होता है, that is bitten hem. So these are the examples of hibiscus family. Lastly, we remember Fabaceae family. This is the last family that we'll be discussing. Fabaceae pea family. और ये pea family कौन सा टाइप का सिमेट्री बताती है? It shows zygomorphic or bilateral symmetry. This also has androecium gynoecium, so it's bisexual. Calyx shows 5 sepals. Sorry guys, just 1 minute, I'll share the screen again. So Fabaceae family is zygomorphic, bisexual, 5 sepals, 5 petals arranged as 1 plus 2 plus 2, that is vexillary estivation. Androecium shows diadelphous condition, 9 स्टेमन एक साथ होते हैं, एक फिलामेंट्स में होते हैं और एक अलग होता है. And they have only 1 carpel, monocarpellary condition. So no need to show as syncarpus because एक ही है. And it also shows superior ovary. So this is the floral formula of Fabaceae. Lastly, इसके examples कैसे याद रखें हम? इसके लिए एक mnemonic याद रख सकते हैं. At the time of sunset, we lip tasted pea pod and muletti. At the time of sunset, we lip tasted pea pod and muletti. So here, sunset, sun refers to sun hem, set refers to sesbania. Lip से हम lupine याद रखेंगे, tasted से हम trifolium याद रखेंगे, फिर P, pod के लिए हम याद रखेंगे pulses, oil, dye, और muletti हम ऐसे याद रखेंगे, it's a medicine. So these are the examples of Fabaceae family. So guys, we have discussed everything about bioclassification, plant kingdom and morphology. Morphology के हमने examples सारे discuss किए और extra families भी cover किए हैं. So just to quickly sum up, your last minute revision should be not line to line, but rather जो difficult concepts है, उसे आप एक बार revise किया करो और जो past year questions है, उसे एक बार refer करो.
So that's it for today, and wish you all the very best for your exams. Thank you so much. Rishi sir, I'm done with the lecture. Sir, are you there?